so that you can recall whatever we did in the last lecture. And at the end, we did one question. No? So please write a similar question. Determine the atomic number of element present in. Determine the atomic number of element present in fifth period and period number is 5, and let us suppose group number also 5. Group number 5. Okay, you can refer the notes of the last lecture. Take how much time you should take? You should take maximum 2 minutes. 2 minutes will be enough. Okay, Shaima got the answer. Very good, Shaima. Periodic table तो देख के नहीं कर दिया आपने आंसर? हाँ शाइमा. Okay, very good. Oh, guys, what happened? बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है? Okay, time is up, guys. What happened? Sabiha, Zainab, Jasleen, Jobita. एक एक करके बताइए. Jobita, what happened? Do you know how to do this question? No, sir. I was not there in the last class. Okay, so did you watch the recording? No, sir. They didn't send. They didn't send. Wow, very good. Whose responsibility it is to learn things? Whose responsibility it is? Tell me, Jobita. पहली responsibility किसकी? Tell me. Sir, Yes, I have. Jobita. Wait, sorry, what? What, Jobita? Sir, if this is last Thursday's means I was not there, and I also asked them to send the recordings. No, last Thursday we did not have class actually. Last Tuesday. Last Tuesday you were present. Were you present in the last Tuesday? Tuesday. No, sir. No. What happened? Are you fine? So, Jobita? so 1 minute. Uh-huh. Sabia, can you send your answer how you have done? I just want to see that. Sabia को आंसर भेजने बोले, Sabia भाग गई.
Jasleen, what happened with you? Tell me, Jasleen, why no answer? Yes, I'm Jasleen. not sure of the Sorry. answer. Sorry. I'm not sure of the answer. So you will not tell me the answer if you're not sure. हाँ जसलीन, नहीं बताइएगा आप आंसर श्योर नहीं है तो बताइए, तो आंसर बताइए ना. Send the answer, okay, Jasleen? Yes, sir. Okay, send the answer. The last Tuesday, no class was there, right? Last Tuesday to Like class 18. 18. Yeah, 18 Tuesday, no class was there, right? Oh my bad. Thursday. हाँ, sorry sir. 18 को class नहीं था. हाँ, 18 को class नहीं था. My bad. Very very sorry. Last Thursday. अच्छा, you asked them for the lecture, yet they did not give you the lecture, right? जो बता? Yes, sir. For Thursday, I asked. You asked. Okay. How many times? ठीक है. I am not saying कि आपकी इसमें गलती है. ठीक है. I completely understand that is a mistake from team that they should have sent the lecture. ठीक है जो बेटा? Fine. So I'm accepting the mistake from their side. ठीक है. बट ना एक चीज आपको मुझे बताना है. लाइक इन दिस वर्ल्ड ना, यू हैव टू डू फॉलो अप्स. फॉलो अप्स जानते हैं आप जो बताओ, Yes. है ना? तो प्लीज ट्राई टू बी प्रोएक्टिव इन दैट, बिकॉज ये आपका काम है ना. I mean, it's your work that you have to study, you have to complete the lecture, you have to ask for the homework, right? You have to do the homework, and then, so this is primarily your work. ठीक है. So you will have to be proactive in this. ठीक है. यहाँ के लिए नहीं कह रहे हैं हम. यहाँ पे तो होना ये चाहिए आइडियली that if you are absent in a class, you should not even be asking for the lecture. The team should be sending the lecture. That should be the ideal case, right? But since everyone is human, some mistakes happen here and there. So the one whose responsibility, I would not say responsibility, but आपका लॉस ज्यादा होगा ना जो बेटा, if the lecture is not being sent. So आप थोड़ा सा proactively उसमें एक बार, like I have told you the way to ask lectures also, I hope. अगर नहीं तो फिर आप सभी के लिए हम फिर से बता दे रहे हैं. Like if you miss a class, ask for the lecture recording. They will say, we will send it to you. Then you say, when will you send it? ठीक है. They will say in 1 hour. ठीक है. Then you wait for 1 hour. If you got the lecture, well and good. If you did not get the lecture, sir, please send me the lecture. They will say, okay, just 5 minutes. If they did not send in 5 minutes, again, sir, please send the lecture. You don't have to shy away in asking the thing that is yours. Make sense, Jobita, Jasleen, all of you guys. Make sense? Yes or no? Please tell me, Shaima, Zainab, Jasleen, Sabiha. तो समझ में आ रही बात Yes, sir. Yes, है ना? ठीक है. No matter whether it is physics lecture, chemistry lecture, कोई भी lecture हो, ठीक है? You message the team, sir, I missed this lecture, please send me the recording. है ना? So what was the reply, Jobita, from Learnivio team? They said they will send it. So what you have to ask then? When will you send it? That day, I was है not. ना? At what time? at home. Sorry, what, Jobita? So, sir, Thursday I was not there in my home. I have a quiz. That's why I didn't attend the chemistry class that day. हाँ, no problem in that. ठीक है ना? I told understand. कभी ना कभी तो absent होगा ही ना. ठीक है. That's okay, not a problem. But now you will remember this method. Yes. है ना? ठीक है. It will be effective. है ना? Yes. ठीक है. चलिए. देखिए, अभी तो लॉस तो आप ही को हुआ ना. अभी तो भले ही आप मतलब टीम में हम पूछेंगे किसको क्या हुआ, व्हाट विल हैपन टू देम, उनको हम 2 बार कह देंगे कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेक्चर्स मिस ना हो बच्चों के. हम तो यही कहेंगे ना. मतलब देखिए, डांटते तो हम आप लोग को भी नहीं है, हम किसी और क्या ही डांटेंगे. ठीक है. हम तो इतना ही कहेंगे, लेकिन लॉस तो आपका हो गया जो पिता, है ना, दैट यू आर नॉट एबल टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है. तो इस वजह से थोड़ा आप मतलब बिल्कुल ऐसे ना परेशान कर दीजिए, परेशान कर दिया कीजिए. हम तो ये कहते हैं, परेशान कर दिया कीजिए मैसेज कर करके, सर लेक्चर नहीं मिला हमको, सर मेरे को असाइनमेंट नहीं मिला, सर मेरे को ये नहीं मिला. मैं अच्छे से बिल्कुल, ठीक है ना, बिकॉज दैट इज योर लेक्चर. राइट. चलिए. जसलीन, सही है आंसर आपका. तो सबिहा, यू सेंट मी द, आपने भेजा क्या सबिहा? सबिहा, यू हैव नॉट सेंट मी द आंसर. ओह माय गॉड. जैनब, कैन यू प्लीज say your mic on?
जैनब, कैन यू प्लीज से योर माइक ऑन? थोड़ा बताएं कैसे किया आपने? Sir, I was not sure about it. बट स्टिल थोड़ा तो बताएं. देखिए, आई थिंक आपने सही से लिखा नहीं, दोनों वहां पे लिखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट एटॉमिक नंबर ऑफ n-1 नोबल गैस. ठीक है. व्हाट इज दिस n? द पीरियड नंबर. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एटॉमिक नंबर ऑफ फिफ्थ है ये, तो क्या हो जाएगा? फोर्थ नोबल गैस. है ना? एटॉमिक नंबर बना प्लस क्या था? प्लस दी ग्रुप नंबर. है ना? ऐसे करना है. ठीक है ना? एटॉमिक नंबर ऑफ फोर्थ नोबल गैस प्लस 5. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द फोर्थ नोबल गैस? बताओ. फर्स्ट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, 36. क्रिप्टॉन, है ना? xenon and radon. 36. 40, 36 ना? 36 plus 5 that is equal to 41. आ गया आंसर. मेक सेंस? Yes, sir. ठीक है. बाकी लोग प्लीज कॉपी कर लें इसको. एक बार ना इसको देखिए. दिस इज, ये ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है. थोड़ा आप लोग ना इस भी मेहनत करना चालू कीजिए. दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ दिस लॉजिक, इसके पीछे का जो लॉजिक है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. लाइक व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट दी, व्हेन यू ट्राई टू look at the fifth period and group number 5 in the periodic table. ठीक है. periodic table रखिएगा और मतलब समझने की कोशिश कीजिए like from where this formula came into being. ठीक है. this is quite logical. लेकिन खुद से ये समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. छोटी सी चीज है बहुत, ये नहीं है उससे नहीं बता रहे. when you will try to understand on your own, एक तो ये होता है ना लाइक हम बता दें आपको कि ऐसे ऐसे ऐसे, उसमें बहुत ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा. the eureka moment for you will be what? The eureka moment for you will be like understanding some concept on your own. And because it is very small and stake इसमें बहुत ज्यादा हाई नहीं, अगर आपको समझ में ना भी आए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्टेक यहाँ पे हाई नहीं. दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दिस टू यू. ठीक है. आप क्या कीजिएगा? पीरियोडिक टेबल देखिएगा, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा लाइक फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट दिस लॉजिक ऑफ एटॉमिक नंबर n-1 नोबल गैस प्लस द ग्रुप नंबर. कहां से आएगा? एंड एवरीवन? Yes, sir. आई थिंक ये सबिहा का भी आंसर. हाँ सबिहा, यू गॉट दिस? यू अंडरस्टूड? आप एक बार भेज देना हाउ यू हैव डन, देन आई वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट मिस्टेक यू आर मेकिंग. ये Sir, आपने पहले ही ना जैनब यहाँ पे क्यों लिख दिया? अच्छा एक से. हाँ जी सबिहा बताएं. नहीं सर मैं ये सबिहा कंफ्यूज. था. सॉरी व्हाट? सर माइक आई ऑफ हो गॉट. गया आपका. अच्छा ये गॉट. जैसे जैनब आपने जो मिस्टेक किया ना, आपने पहले ही एटॉमिक नंबर 12 कर दिया. हाउ डिड यू डू इट? एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12 कैसे लिख दिया आपने? एटॉमिक नंबर 12 10 लिखना चाह रहे थे शायद आप, राइट जैनब? नहीं पता आपको भी, आपने क्या काटिए इसको पूरा अच्छे से एंड देन राइट व्हाट वी हैव रिटन. ओके. चलिए, आई होप ये तो सबको समझ में आ गया होगा, है ना? राइट. नेक्स्ट, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ऑल इफ यू डन राइटिंग, यस और नो प्लीज टेल मी. एक बार यस और नो जल्दी जल्दी बता दे. ऑल इफ यू डन राइटिंग. Yes, sir. ठीक. प्लीज राइट मी. राइट दिस विद मी. ओके. जो पता यू विल हैव टू लीव सम पेजेस. कोई नंबर ऑफ पेजेस बता दीजिए प्लीज फ्रॉम द फॉर द लास्ट क्लास. वी स्टार्टेड विद determine the, this is the starting of last class and this is the end. Determine the atomic number if group number is given. अच्छा आपने यहां से पहले कर लिया एटॉमिक नंबर 20.
वो तो हम समझा रहे थे थोड़ा सा। खैर, कैन somebody tell me how many pages? 4.5 pages, Shaima is saying. ठीक है जो बेटा, so you leave 5 pages. और किसी का है क्या? 4 pages है ना? Also 5 pages will be enough for you जो बेटा, ठीक है? Pages not sheets, right? Shaima and Zainab, pages ना, sheets नहीं. 4 sides, हाँ ठीक है, मतलब pages ही. ठीक है ओके जो बेटा. ओके डन. Yes. शुड वी स्टार्ट? ठीक है चलिए अब लिखिए. प्लीज राइट विथ मी. इट इज कंपोज्ड ऑफ, it is composed of 6 groups as the p subshell can hold 6 electrons. Can hold 6 electrons. तो ये कहां से कहां तक होता है? p block elements. It is from group number, from group 13. 13 can also be written as 1, 2, 3a or 3a like this, to group 18, which can be written as 1, 2, 3a or 8a. Right? A few important points regarding this. It contains non-metal, metalloid, non-metal, metalloids, and metals. And metals. Next one लिखिएगा. Element, this is very important. ये जो second point है ना काफी important है. Element above metalloid are non-metals, and below metalloids are metals. So if you know what are the metalloids, then you can easily identify whether something is non-metal or it is a metal. Okay. So what we will do, we will only write the metalloids. What is the metalloids? Please write here. Metalloids. में आपके पास बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, arsenic, antimony, tellurium, and polonium. ठीक है. So these are the metalloids according to your NCERT. Now many books they don't consider boron as a metalloid. ठीक है. चलिए लिखिए इसको जरा. Raise your hand once you're done. So, बोरॉन पे ऐसे मतलब स्टार लग दीजिएगा. आई थिंक जहां तक हमको याद आ रहा है एनसीईआरटी आल्सो डज नॉट कंसीडर बोरॉन एज अ नॉन मेटल. बोरॉन पे स्टार कर दीजिएगा बस. Sabiha just waiting for you. ठीक है. यहां से यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दीज आर कंप्लीटली सारे के सारे क्या हैं? दीज आर नॉन सॉरी मेटलाइट्स. डन एवरीवन? ठीक. चलिए नेक्स्ट लिखिए. यहाँ पे सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रुप 13. ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ग्रुप 13 एलिमेंट्स में क्या है? दिस इज नोन एज बोरॉन फैमिली, बिकॉज boron is the first element in this particular
group. Now, what are the elements that we have here? We have boron, we have aluminium, we have gallium, indium, and thallium. Now, below thallium, you are going to see that in the NCERT and many other books. Beyond thallium, you will be having nihonium, okay? Nihonium. But you don't have to remember them. Those are trans uranium elements. उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है. But if in your school they ask you and force you guys to remember, नहीं thallium के नीचे भी याद रखना आपको what is present of the thallium, then you can learn if your school is saying so. But boron, aluminium, gallium, indium, and thallium, these are important and तो आपको याद रखने हैं. Right? Now, what is the atomic number for boron? It is 5. Atomic number for aluminium, it is 13. This is 31. After that, you have 49 and 81. 49, 81. Now, boron, if you see, it lies in which period? It will be lying in the second period. Second period, which will be lying in the third period, fourth and fifth and sixth and so on. Okay, so ध्यान रखें. And if I write the electronic configuration for boron, it will be what for 5. We will use helium. Helium, we have already filled 2 electrons, and then we are going to have 2s2 and 2p3. Then for aluminium, we will write neon. Here we will write PS2 and PP3. For gallium, we are going to write argon. In argon, we have to start from 4s2. Now, after 4s, we have to fill the 3d10. And after 3d10, we will be filling 2p3 nahi hoga na? 2p1 hoga, my bad. PP1. And here we will be having 4s and 4p1. Okay? Then after argon, you have krypton. You will have 5s2, 4d10, and 5p1. Then for thallium 81, you will be having, after krypton, what do we have? We have xenon. Xenon 6s2, 4f14. Then you will be having 5d10 and 61. Just let me know if I need to explain you somebody. If anyone wants an explanation for the electronic configuration, please let me know now. If you want an explanation on the electronic configuration, please let me know. Or if you just want to know how I am writing so quickly, or if you want to know what is going behind the scenes while writing the electronic configuration. Okay, fine. So I think all. Okay, Jaslin, can you please turn your mic on? Yes. ठीक है. Okay, ये तो for example, if you have 31 na, so whatever format is what we have to look at the noble gas which is before 31. So we'll get argon 18, and how now we have filled 18 electrons. How many electrons are remaining now? 13 electrons are remaining. Can you see that? Yes, sir. So we have to fill 13. Argon is the noble gas number 3rd. So we'll start from 4s. After 4s, we have 4s, 3d, 4p. After 4s, if you remember school, public school, Delhi public school, then in that format, after 4s, what do we have? We have 3d. So 4s2, then in the 3d, we have to fill the 10 electrons. Remaining 1 electron will be filled in 4p1. Does this make sense? Yes, sir. ठीक है. And what you will do ना, मतलब इसको ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा so that you at least once you would have written the electronic configuration of each element in the periodic table, and that will be beneficial for you. Okay. So right now it's very easy to write. You know why? Because after helium we will be having neon. We know that. After neon we will be having argon. After argon we will have krypton. Then all. Okay. And please see that this is common. 2s, 2p, 3s, 3s2, 3p1, 4s2, 4p1, 5s2, 5p1, 6s2, 6p1. And that is the general electronic configuration. General electronic configuration. So those who are not present in the last lecture, we write the general electronic configuration as NS2, NP1. General electronic configuration का मतलब ये होता है general outermost electronic configuration, because the outermost electronic configuration is the one which is more important in chemistry, because all the chemical reaction it happens because of the last 10 electrons. Okay, so that is why we write the outermost electronic configuration as the general electronic configuration. So all of these, what is common between them? That whatever the period, what is this n by the way? As you can see, in the second period we are in the 2s2p, third period 3s3p, fourth period 4s4p, fifth period 5s 5p, sixth period 6s6p. Okay, so that is why
This n is what this n tells you about the period number, and this is the general electronic configuration. If I talk about the valence electron की अगर हम बात करें, then all of this, for example, even if you look at helium, it is having 6s2, 6p1. That means the last shell, the sixth shell, it is having 6s2 and 6p1. That is a total of 3 electrons. And the valency will be also equal to 3. Jovita, were you present in the class of valency and valence electron? Jovita, were you present in the lecture of valency and valence electron? Yes, sir. Were you present? Yes. Va- Yes. Valency, valence electron? No. Yes. Now you will have a homework. See, I hope this is not very difficult. ठीक है? For example, after boron you will be having carbon. तो carbon के लिए क्या कीजिएगा? You can easily write the atomic number ना 5 के बाद 6 आएगा. After aluminium, what are you going to have? You are going to have silicon. Aluminium के बाद क्या आएगा? 13 के बाद 14 आएगा. So you can also write the electronic configuration from here only. Sorry, atomic number from here. Electronic configuration में क्या होगा? Helium 2s2 और carbon it will be 2p2. सब में एक एक आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा. So in the homework, what you will do? Similarly complete all the groups of p block elements. Okay. Now, one thing that we will see in the p block element is that थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना? Please don't miss what I'm trying to say here. We cannot fill anything in the 2s, 3s, 4s, 5s, 6s. I'm repeating once again. Even if you go to carbon or we go to nitrogen, oxygen, anywhere, if I go further on the 14 group, 15, 16, 17, and 18 group, there will be no change in the 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, or 6s2, or in general, we can say there will be no change in the ns2 part. That makes sense? Yes or no? Please tell me. Yes or no, guys? जल्दी बताएं. Does that make sense? Yes, sir. है ना? ठीक है. Now, what will be changing? The NP will be changing. In the group 13, NP is 1. In the group 14, NP will be 2. And for carbon 2s2, 2p2. So NP will be ranging anywhere in the p block elements. The NP will be ranging anywhere from 1 to 6. So that's what we write as a general electronic configuration for p block elements. General electronic configuration for p block. क्या होता है? ns2, this is a constant. No matter what element you pick from the p block element, it will be having ns2. What is the n? N is the period number. Now np, this will be varying from 1 to 6. It can be either 1, 2, 3, 4, 5, or 6. This is the general electronic configuration for the p block element. Does that make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक है. Are you still writing? Sir, I'm writing. Done, sir. Moving on. Right, next, D block elements. तो D block elements में कहां से कहां तक होते हैं? First of all, we are going to write. It consists of
10 groups as the D subshell no, after we are done with the class ना, don't leave any pages for the P block elements, ठीक है? मतलब जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सीक्वेंस में रहे. P block एक ही ग्रुप हमने कराया है यहाँ पे, है ना? So just do D block elements when the class is over. Then homework की तरह उसको लिख लीजिएगा. बस यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा कि homework तो यहाँ पे लिखा है ना. So once you are revising, then you will remember that okay fine, I have done the P block elements later after the class. ठीक है? So no need to leave the pages. Right here, it consists of 10 groups as the D block, as the D subshell can hold 10 electrons. तो कहाँ से कहाँ तक आपके पास रहेगा? You will be having the D block elements. It will start from the group number 13 to group number 12. 13 or 3, sorry, from group number 3 to 12. Group number 3 to 12. अब देखिए, मतलब आई कैन शो यू ऑल द एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? सो आई विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स. ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. नाउ इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स देयर आर अ फ्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच आर एक्सेप्शन. ठीक है? एक्सेप्शन में आपके पास क्या है? एक तो आपके पास है कॉपर. कॉपर से पहले क्रोमियम कर लेते हैं. Chromium, that is 24. I hope you guys remember this from the atomic structure. Argon, argon, 4s2 and 3d4 was the expected. What is the actual? Actual is argon, 4s1, 3d5. Similarly for copper, that is 29. We have argon, 4s2 and 3d9, that is expected. The actual, by the way, expected is wrong, है ना? बात समझ में आ रही है ना? Expected and actual में, and this will be 4s1, 3d10. 4s1, 3d10. Now, in general, if I say, for example, you have something else, मान लीजिए आपको हमने मैग्नीज का कहा, Mn that is 25. This will be argon, 4s2, 3d5. ठीक है? So the general electronic configuration for this, general electronic configuration for D block. What does it become? As you can see, the 4s is sometimes 1 and it is sometimes 2. है ना? 4s मतलब the ns fourth period में, because we have chromium and everything, this is in the fourth period. ठीक है? तो ns जो होगा, it will be either 1 or it will be 2. ठीक है? या तो 1 होगा या तो वो 2 होगा. And the n minus 1d, not nd, because when we have 4s, we have 4 minus 1, that is 3d. ठीक है? n minus 1d will be ranging from 1 to 10. अच्छा, एक काम किया, एक काम ये कर लीजिए ना, यहाँ पे 0 से 2 कर लीजिए, because there are certain elements जहाँ पे you will have ns0 also for higher electronic configuration. जैसे कि I think for platinum, as I can remember, in platinum you have ns0. ठीक है? So platinum, platinum, ठीक है? तो ns0 to 2 कर लीजिए, n-1d 1 to 10. Like some books you will see 1 to 2, some books you will see 0 to 2 also. Right? 0 to 2 for generalizing. General electronic configuration for D block element. There are 10 exceptions. Total in the periodic table, you have 20 exceptions. Exceptions का मतलब the expected and the actuals are different. 20 exceptions in which there are 10 in the D block elements and the other 10 it is in the F block elements. ठीक है? So, but you don't have to
If you want to memorize, मतलब मेरे पास है, there are some tricks to memorize and do everything, but you don't need that actually. Okay. The return on investment on memorizing the exceptions, it is very less. The only two that you have to remember, and there is no option in that, is the chromium and copper. No matter what, you have to memorize that chromium and copper's electronic configuration. Okay. Others you don't have. If somebody wants like how to remember the 20 exceptions, please message me on WhatsApp. I will let you know. Done everyone? Yes or no? Please tell me. Done, sir. Moving on. Right, next point. These are called, that means the D block elements, है ना? These are called transition elements. ठीक है, transition elements और metals. ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स. नेक्स्ट वन यू विल राइट the D block has 3 series. ऐसे तो अगर रियलिटी देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल में तो 4 सीरीज है, लेकिन 3 सीरीज, 3 ही सीरीज आपको पढ़ना है ज्यादा, तो उसी वजह से हम लोग 3 सीरीज में ही फोकस करेंगे. तो वन इज द 3D सीरीज. क्या मतलब होता है 3D सीरीज में? सो इन 3D सीरीज वी आर हैविंग शक्ति विक्रमन फेकोनिकोसिस, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Okay. So those are the things that is present in the 3D series. Now, what is the quality and what is the property of 3D series? In 3D series, the electrons are filled in 3D section. So 3D section में 1 से लेकर 10 तक electrons fill होंगे. Next we have the 4D series. 4D series में you can write electrons are filled in the 4D section. And third आप लिखिएगा 5D series, in which electrons are filled in the 5D section. ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा इसमें, Zn, Cd and Hg don't show, CDHG don't show most properties of transition elements. Most properties of transition elements. Elements as they have fully filled n-1 d subshell. अगर देखिएगा zinc, cadmium and Ag, these are the last elements of the 3D series. Sorry, last element of their respective series, है ना? Zinc for the 3D series, cadmium for the 4D series, and mercury for the 5D series. Obviously, if they are at the end, so they will be having D10 configuration. The rest of all the other elements, they are going to have D1 to 9 configuration, but these are going to have D10 configuration. So, baki sab mein there is partially filled d orbital. In ZnCDHE, we have fully filled d orbital, or the d subshell is fully filled. That is why they don't show the most properties of transition elements. So, this point is not very important in 11th standard, but it's very important in the 12th standard, where you have to specifically learn about, there's a complete chapter on D and F block elements. Okay? So वहां पे ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट बिकॉज दिस इज इन एनसीईआरटी इवन इन 11th स्टैंडर्ड, you have to remember this, and at least this should be present in your notes, so while you are revising एक बार आपके नजर चला जाए.
ठीक है. Now we will write the properties. In properties, you will write high melting point and boiling point. ठीक है. Except इसमें भी दिखेगा ना, exception क्या आ रहा है? Mercury is the exception here. Except Hg, because as you know that mercury, it is what? It is a liquid at room temperature. ठीक है, mercury Hg. It is liquid at room temperature. Second point you will write, they form colored compounds. ठीक है. नाउ यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को ना ध्यान नहीं आता. We write generally in books also, you will see that they write they form colored compounds. The metals are not colored. The compounds that they make, they are colored. याद रहेगा. Jasleen, Sabiha, Shaima, Zainab, Yasola, please tell me. Yes, sir. है ना? All of you guys will remember, right? That they form colored compounds. Now, in assertion reason type of question, na, these things, the statements will come and वहाँ पे confusion हो जाती है कभी कभी. ठीक है. Third में you will write they show variable oxidation state. They show variable oxidation state. What is the meaning of variable oxidation state? We have right now done valency. आप valency समझ लीजिए. Yeah. So oxidation state is basically, it also has a sign plus and minus. Valency does not have any sign. Valency just tells you about the combining capacity, whether it can make one bond, two bonds, and whatever. Now, oxidation state, it talks about the combining capacity with some sign also. So if something is having a positive sign, that means it will combine by losing electron. If something is having an oxidation state of negative, that means it will be bonding and it will be combining by gaining electron. ठीक है. तो जिस तरह से वैलेंसी में ना, as you know that we want to either go to 0 or we want to go to 8, and whatever is nearest. So if the valence electron is 1, then we will be likely losing that 1 electron to get to 0. That is the noble gas configuration, right? And while losing, so when it is losing, the oxidation state क्या आ जाएगा? उससे positive में आ जाएगा ना. I think you have done these things in the 10th standard, not by the name oxidation state, but you know that we have to achieve the noble gas configuration. That can be done either by accepting electron, so you will get a, you will have some valency, that valency will be now negative. For example, nitrogen के अगर हम बोले, nitrogen, it has a valency of 3, but what happens when it, what happens, what is 3 telling us about? 3 is telling us that the valence electron is 5 if you add 3. So nitrogen will have oxidation state -3, valency is 3, oxidation state -3. But if I compare that to aluminium, the valency of aluminium is also 3. But aluminium is getting the valency 3 because it should lose 3 electrons to get to the noble gas configuration. Now losing 3 electrons, that will give it a positive charge. Okay, so oxidation state of aluminium is going to be +3. I hope you understood some things. Later on in this particular chapter, we are going to redo this oxidation state part, so don't worry. So next point is these are used as catalyst. Now what is a catalyst? Catalyst is anything that increases or alters the speed of a reaction. How quickly a reaction is happening, that can be altered by a catalyst. So these things, that is the transition elements, they work as good catalysts. I hope you have done writing with me. Right next, that is the S block elements. The general electronic configuration for the S block elements. यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिएगा NS, remember NS तो हमेशा 2 ही रहेगा. NS में there will be no change. NS will be always 2. Then you will be having N-1 D, N-1 D. Sometimes it is, generally it is 0, sometimes it is 1 also. है ना, 0 और 1 में fluctuate करेगा. Then you have the N-2 S, N-2 S, and the F suction is filled, that is from 1 to 40.
ठीक है, 1 से 14. Now here you can see that the different subshells are filled in F block elements. There are some elements in जिसमें n s में तो सब में रहेगा. There are some elements in which you will have one electron in the n minus 1 d also, and n minus 2 f1 to 14, that will be in all the cases. Okay, so this f block element is the only one in which you have to fill electrons in 3 different subshells. बाकी किसी में नहीं करना पड़ता. After this you will write it is composed of, अच्छा दूसरा चीज है, all f block elements lie in group 3. ठीक है, थर्ड ग्रुप में ही रहेंगे सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, और इनका कोई ऐसा ग्रुप बनाया नहीं गया. दे हैव बीन ब्रोकन डाउन फ्रॉम दी डीप, लाइक एक्चुअली द पीरियोडिक टेबल शुड ना लुक लाइक दिस. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपके पास 2 ग्रुप्स आते हैं ऐसे. दे शुड बी दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 2. यहाँ पे फिर डी ब्लॉक आता, फिर उसके बाद ऐसे पी ब्लॉक आता. This is the real periodic table how it should have been. But लेकिन इतना like while the time of making periodic table, these all the f block elements were not discovered. That is why f block elements में कुछ ही बस थे. So that is why they removed this. मतलब इतना ज्यादा blank space रहता है, they removed this and they concise the periodic table for usability purposes. कि यूज करने में कम से कम आसानी. एंड दे सेड दैट कि एफ ब्लॉक का कुछ तो है ही नहीं, एफ ब्लॉक को नीचे रख देते हैं. इसमें जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाएंगे उनको हम लोग बाद में फिल करते रहेंगे. ठीक है, दैट्स द बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. इनको ऐसे हटा के बिल्कुल जुदा जुदा, है ना, तन्हाई में रखा हुआ है लोगों ने टेबल से हटा के. द रीजन इज दैट दे आर नॉट वेरी यूजफुल. ठीक है ना, जो यूजफुल लोग नहीं होते उनको ऐसे हटा दिया जाता है. जिंदगी की भी यही कहानी है, राइट. समबडी इज नॉट यूजफुल, यू मतलब आप समझिए इस चीज को. You may have heard somebody from your extended family, they may have got some good position in the government or they got some good job, है ना. अगर आपकी immediate family में, then very good. Now if some, जैसे ही किसी की अच्छी जॉब लग जाती है, जैसे ही किसी को मतलब like if they achieve something, उसके नए नए रिश्तेदार निकलने लगते हैं, राइट. मतलब जो उनको नहीं भी जानता है, दे ऑल्सो से, अरे वो मेरा चचा लगता है, अरे उसको तो हम गोदी में खिलाएं. लाइक इफ समबडी इज ओल्ड, दे विल बी लाइक, उसको तो हम गोदी में खिलाएं, भले ही उसकी शक्ल ना देखी हो उसने कभी जिंदगी भर. ठीक है, तो वैसे ही इफ समबडी इज यूजफुल तो उनको जगह मिलती है. जो यूजफुल उतना नहीं रहता फिर उनको जगह में जगह मिलती नहीं है ना. दैट इज नॉट, नहीं, दैट्स गुड और बैड की तो हम बात नहीं करेंगे, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है. बट दैट्स हाउ द सोसाइटी इज, है ना, नेचुरली. किसी ने थोपा नहीं. ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रूल नहीं है कि कोई अगर अच्छा काम ना करे तो उसको किनारे किनारे रखो, उसको मतलब समाज से हटा रखो. इज नो रूल लाइक दैट. बट दैट्स हाउ नेचुरली, मतलब ये नेचुरली ये एक आउटकम निकलता है दैट इफ समबडी इज नॉट वेरी यूजफुल, कोई इनको फिर भाव नहीं देता, कोई इनको फिर जगह भी नहीं देता. तो वही बेचारा हुआ है एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ, दैट दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे वर नॉट वेरी यूजफुल while the making of periodic table. अभी क्या बात है, periodic table ज्यादा दिन नहीं periodic table को. ठीक है, आपके मतलब यू कैन कॉल हिम ग्रैंडपा टाइप ऑफ थिंग. ठीक है, उतना ही उम्र होगा, 70-80 साल के करीब हुआ होगा, 70-80. हाँ, अप्रोक्सीमेटली, लाइक इफ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, हाँ 70-80 साल हो रहा होगा periodic table को, ज्यादा दिन नहीं हुआ periodic table. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट वी विल राइट it is composed of 2 rows. It is composed of 2 rows. एक को बोलते हैं lanthanolids, or we call it lanthanide. ठीक है, these are also known as aka rare earth elements. क्या कहते हैं इसको, रेयर अर्थ एलिमेंट. कहां से कहां तक होगा, दिस इज फ्रॉम सीरियम टू लुटीनियम.
ठीक है, फ्रॉम सीरियम, सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, टू ल्यूटेटियम Lu, that is 71. सेकेंड इज लैंथेनाइट के बाद है आपके पास एक्टिनोइड, actinoid, or we call it actinides also, actinides. Actinides. Actinides के बारे में you have to remember one thing, that it is most of these are radioactive. Radioactive elements. Most of these are what? These are radioactive elements. कहाँ से कहाँ तक होते हैं? This is from thorium, that is thorium 103 to 90 होगा ना? 90 to lawrencium, that is Lr 14 elements will be 103. ठीक है, so these are actinides, thorium से लेके lawrence. After this you will write another point, elements after uranium, atomic number 92, are called transuranium elements, are called transuranium elements. And ये जो transuranium elements है ना, they are like they are all man-made first of all, and some of these are, they have been made only in nanogram quantities or even less. ठीक है, transuranium elements, these are man-made and made in very small amounts, nanogram or even less. ठीक है, nanogram या उससे भी कम अमाउंट में इसको बनाया गया है. Actually, like after the World War II, Russia and USA, both of these countries, they were in a cold war. अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत तो ठीक है. व्हाट इज कोल्ड वार? एनीवन नो व्हाट इज कोल्ड वार? आप लोग तो जानेंगे, आजकल काफी यूज होने लगा ये टर्म कोल्ड वार, लाइक इवन बिटवीन लाइक क्लासमेट्स एंड एवरीवन. डू यू गाइस नो व्हाट इज कोल्ड वार? जोबिता, जसलीन, सबीहा, शाइमा, जैनब, एनीवन? जोबिता की करके पूछते हैं. जोबिता, डू यू नो व्हाट इज कोल्ड वार? Yes. नो. जसलीन? No, sir. नो. सबीहा? Yes, sir. व्हाट इज कोल्ड वार? टेल मी. बताइए बताइए. Sir, when two people are like having an like type of an argument, but then उनका like जम रहा नहीं है, उनका बन रहा नहीं है, like both of them don't talk to each other, but they know like they have something going on. हाँ, लेकिन कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही है. क्या सर? कन्फ्रंटेशन नहीं हो रही है मतलब दो लोगों का बन नहीं रहा है, किसी बात पे हो गया है कुछ, लेकिन दे आर नाइदर रिजॉल्विंग है, दे आर नॉट फाइटिंग, है ना? वैसे मतलब आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहा है ना, हाँ हाँ तू 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 तड़ाक नहीं हो रहा है, राइट? हाँ. है ना? मतलब बस एक अपना अलग अलग, वो अपना अलग अलग, राइट? जैनब, लेकिन ग्रज नहीं, ग्रज सही वर्ड नहीं है. व्हाट वर यू सेइंग जैनब? शाइमा सेड ग्रज. I didn't say anything, sir. माइक तो ऑन किया था आपने कुछ बोलने के लिए? No, sir, my microphone got pressed. अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. हाँ ठीक है. सभी ने जो बताया ना, सभी ने सही बताया कि देयर इज एनिमिटी बिटवीन टू पर्सन्स बट दे आर नॉट हैविंग एनी कन्फ्रंटेशन. ठीक है, बातचीत बंद है. बातचीत अगर हो भी रही है तो बस सलाम कलाम हो रहा है, लेकिन मतलब वो मतलब कुछ है दोनों के बीच में. दे आर नाइदर कन्फ्रंटिंग व्हाट इज हैपनिंग
ये तो लोगों के बीच में बाद में आया है। आप लोग की जनरेशन में हमने अभी मतलब सुना है ये सब चीज। यू गाइस आल्सो यूज द वर्ड कोल्ड वॉर, लेकिन कोल्ड वॉर एक्चुअली इट इज यूज्ड व्हेन टू कंट्रीज दे आर एनिमी कंट्रीज बट दे आर नॉट फाइटिंग वॉर विद ईच अदर। व्हाट दे आर डूइंग, वो लोग ओलंपिक्स में मेडल लाने पे मतलब ये कर लाइक वी विल विन मोर ओलंपिक मेडल्स, है ना, टू शो दैट वी आर स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है, यूजिंग मेथड्स अदर देन वॉर टू शो समबडी दैट वी आर स्ट्रॉन्गर देन यू, दैट इज कोल्ड वॉर। सो एज यू कैन सी, मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान हो, लाइक इनिशियली व्हेन पीपल वर गोइंग टू स्पेस, I hope you have seen a lot of names that are Russian names. Yuri Gagarin. You know who is Yuri Gagarin? यूरी गैगरिन का नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? भाई क्या ही करते हैं आजकल के बच्चे। हाँ गाइस, यूरी गैगरिन, नोबडी नोज यूरी गैगरिन। नहीं पढ़ाते क्या अब कुछ भी? यस और नो बोलेंगे गाइस? यूरी गैगरिन। ओके, लीसा, लीसा, लीसा इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। अच्छा, व्हाट वाज द फर्स्ट what was the first living thing that went into space? First living thing who went to space? भाई साहब, सबसे ज्यादा यूट्यूब में सब्सक्राइबर किसके हैं? सबसे ज्यादा यूट्यूब में सब्सक्राइबर किसके हैं जो बता? Yes. सबिया बताएंगे, सबिया बताइए सर। सबिया को पता है मोस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर? सबिया? PewDiePie sir. प्यूडीपाई? Oh no प्यूडीपाई he's the है? second है वो, first तो वो कुछ वो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, वो चैनल है ना। उनको सरपास नहीं कर दिया? अच्छा, अच्छा, मोस्ट फेमस यूट्यूबर, मोस्ट फेमस कर दीजिए। चलिए छोड़ते हैं, हटाते हैं। मोस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, मोस्ट फेमस। भी नहीं पता? क्या पता भाई आप लोग को? क्या पता है जनरल नॉलेज में? फिर पता टी है क्या? सीरीज। टी सीरीज? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, टी सीरीज मे बी इट इज हैविंग, लेकिन द बिगेस्ट यूट्यूबर इज मिस्टर बीस्ट। हाँ शायमा सही है, मिस्टर बीस्ट। ठीक है, चलिए कुछ तो रेलेवेंट आप लोग को पता है ना। इवन दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन। अब मतलब आई कंप्लीटली, हम कुछ तो आप लोग को आना चाहिए, है ना? क्या तो आपको बताओ कि स्पेस में पहला आदमी कौन गया था? क्या तो कम से कम आपको ये पता हो कि सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है अभी? क्या तो ये पता हो सबसे बड़ा, हु इज द मोस्ट फेमस टिकटॉकर? आई डोंट नो, टिकटॉक इज बैन इन इंडिया बट स्टिल, हु इज द मोस्ट फेमस टिकटॉकर? हु चार्ली इज द डमिंगो। मोस्ट फेमस? चाहे कुछ है, ठीक है, सभी को पता है। हु इज द हाँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए राइट, राइट नाउ? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? जो बाइडेन। जो बाइडन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अमित शाह। अरे भाई नो, नॉट किसी को सही आंसर पता है। He's not, he's not. I क्या don't know होता whether he retained even the, हाँ yes, जो भी था you were saying correctly. है? हाँ हाँ, Zainab correct. हाँ, द्रौपदी मुर्मू is from Odisha. Do you know Odisha? Odisha पता है? What is Odisha? Have you heard this thing Odisha? Yes. Yes. What about others? हाँ, it's a state। अच्छा पता है, चलो कम से कम कुछ तो पता है। ओके फाइन, व्हाट एल्स? चलिए ठीक है। सो आप लोग, भाई आप लोग, पता नहीं यार स्कूल को क्या हो गया। आई मीन आई डोंट इवन रिमेम्बर रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स कि यूरी गैगरिन वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू स्पेस एंड द फर्स्ट लिविंग थिंग टू गो टू स्पेस वाज अ फीमेल डॉग। आई थिंक हर नेम वाज लीसा, लीका कुछ था, दैट आई डोंट रिमेम्बर, बट आई डोंट इवन रिमेम्बर रिमेम्बरिंग इट कि मेमोराइज कर रहे हैं हम इसको। अगर हमने कब पढ़ा था, दैट इज इन माय सबकॉन्शियस। द फर्स्ट इंडियन टू गो टू, फर्स्ट इंडियन वुमेन कर लेते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, फर्स्ट इंडियन, हाँ जो बता,
Correct, Kalpana Cha. Yeah, correct. Thank God. कुछ तो oh yes, Kalpana Chawla. Okay, fine. So as you know that this was also a race, na? कि Russia or USA, Russia USA. You will see Russia first person in the space, moon में USA. So this type of battle, है ना? And like I hope थोड़ा सा आपको पता हो, most prominent and the most famous, most recognized chess player. They're also either Russians or American. Right now we have from Norway that is Carlsen. Even India is doing so good in chess. Anyone follows chess here? कोई chess follow करता है? Nobody. How many of you know how to play chess? How many of you know how to play chess? Nobody. Yeah, okay. Justine, you know? Okay. Like how much do you know? All of it. Sorry, what? Justine? I know how to play chess properly, but I'm not that good. Like I can And so you play know, it. like one first level of playing chess is that you know how the pieces move. You know how the pieces move, right? Yes, sir. Okay. Then you know some openings like the London system or some other openings. No. Sorry, I don't know the openings. Like any theory of chess, like you have only played chess or you have studied chess? Just like played chess, not like studied it. Just played chess. You know, there are books for chess. This way, there are various openings. Like if you play d4, sorry, d4. You know when I say d4, d4, Yes, e5. sir. Actually, you know this thing. चलिए ठीक, चलिए कुछ तो आता है. Now that is very good because d4, e5, all of these nomenclature ना. I like when I was at your level, तो उस टाइम we had board chess only. Online नहीं था कुछ. So online, I see that people who have started playing online, they're quite good in identifying the squares, like whether it is d4, e5, or something like that. चलिए खैर. No, moving on. Elements after union में पढ़ रहा हूँ. ठीक है. बस इतना था. अब अगला लिखिएगा जरा. There are few points that we will write, and then this class will be over. Next class से फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चालू करेंगे असल में. Right, next, periodicity in properties. ठीक है, तो introduction to the periodic table is done. Properties. Okay. Periodicity in properties, please लिखिएगा यहाँ पे. Repetition of similar property after certain regular intervals. Sir, can you read the first word? Oh my bad. Repetition लिखा हमने, लेकिन repetition. R-E-P-E-T-I-T-E-P-I-O-N. Yeah. Repetition of similar properties after certain regular intervals is called periodicity in properties. Okay. So after a certain interval, if something is repeated, then we say that repetition किसका हो रहा है? Properties का हो रहा है. So we say that there is a periodicity in the property. Okay, there is a periodicity in the property. So what is the cause of this particular periodicity? उसको लिखिएगा cause of periodicity. Cause of periodicity. First thing is similar outer electronic configuration.
coming at regular intervals. Regular intervals. And as we have seen that, like if you start from hydrogen, helium, then we have lithium. Hydrogen, lithium, similar electronic configuration, similar property. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Then उसके बाद फिर क्या है? Sodium. Again, lithium and sodium, similar outer electronic configuration, and that is why similar properties. Make sense? What is the cause of property? Just please tell me. Yes, अब sir. इसके बाद आप एक चीज जो आपको याद करनी है, just so you have to understand this. The next point you have to memorize elements with similar properties occur at intervals of 2, 8, 8, 18, 32. That means सबसे पहले आपको ना सेकेंड एलिमेंट विल बी लाइक जैसे हीलियम है, हीलियम के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, तो हाइड्रोजन लिथियम सेकेंड एलिमेंट में आपको क्या मिलेगा? सिमिलर प्रॉपर्टी. After that, the eighth element will be having similar property. After that, again eighth element. After that, the 18th element will be having. After that, the 32nd element will be having similar property. Okay, 2, 8, 8, 18, 32. This may remind you of the maximum number of electrons that can be present in the first shell, second shell, third shell में जो fill करते हैं हम, है ना? फिर fourth में फिर fifth fill करते हैं जो. ऐसी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना आपको पहले in the 9th standard, 10th standard. अच्छा आपको नहीं लिखते थे क्या? You may have not written. Copy this down, raise your hand once you're done. Waiting for Jovita and Sabina. Just waiting for Sabina now. ठीक है. Saima, can you please see your mic on? Saima, Yes, sir. कैसी चल रही पढ़ाई? Say it's good. मुझे शर्मा क्या गया? आप पढ़ाई के बारे में ही पूछा है आपसे हमने. कैसी चल रही बताइए? सही चल रही है? क्या दिक्कत आ रही नहीं है अभी बताइए. लाइक वी हैव सम टाइम ना, जनरली टाइम नहीं रहता हमारे पास तो बात नहीं कर पाते आप लोगों से. सो आज यहीं पे खत्म करेंगे ना, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉपर्टीज. I think I introduced the properties in one of the lectures as effective nuclear charge, atomic radius and so on. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे. जी बताएं. हाँ शाही माटी नहीं. You have maths और bio? भूल गए. I have bio. बायो के बारे में तो हम नहीं पूछ पाएंगे. फिजिक्स कैसा चल रहा है? Good. फिजिक्स good. क्या चल रहा है फिजिक्स में? What chapter is going on right now? In Learnivio or school? Different chapters are going on in the Learnivio and school. Yeah, in school we have reached till the 4th chapter, and in Learnivio we're still in the 3rd. Fourth chapter is what? Newton's laws of motion. Yeah. And here you are in motion in a plane, 2D. Yeah. Okay. Yeah, the
School may they have like just to teach. Also in school, you must have done with one unit test, right, Shaima? Yes, sir. How was your physics? Chemistry, I remember it was very good, right? You just scored like some 0.75 marks was deducted, if I remember correctly. 0.25. 0.2. Oh my bad. 0.25. Okay, fine. How was physics? It was fine, not bad. How much did you get? 19.5. 9. And that was out of 30 or 20? 30. 30. So which chapter was problematic? Unit dimension and measurement? Was that the problematic chapter? No, the second one. Within the straight line? Yeah, the numericals, I missed them. Numericals. So have you analyzed your paper, your test paper, whatever was done in the school? Yes. Okay, so see, uh, let me tell you honestly, guys, this will be helpful. Whenever there is a test that is occurred and you have got the paper, so what you will do, you will write question number 1, okay, and then you will write the ऐसे एक शीट बना लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स होते हैं, फुल मार्क्स, रिमार्क. ठीक है, you have to do this. I mean, like 11th and 12th standard, 11th and 12th standard, these classes, these are like work. ठीक है ना, आपको वर्क, these are like complete job है, आपका समझ लिया आप, है ना. This is a job type of thing. That कुछ इसमें आपको मतलब एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. जो चीज नहीं लिखी हुई है ना, nobody is going to write these things in a book that this is how you have to study. ठीक है, लेकिन जब भी आपको पेपर मिले क्वेश्चन नंबर 1, है ना, मार्क्स ऑब्टेन, लेट अस सपोज 2, फुल मार्क्स 2. रिमार्क में आप लिख दीजिएगा इफ द क्वेश्चन वाज समथिंग गुड, देन अ गुड क्वेश्चन, बैड मतलब रिपीटेड क्वेश्चन, कुछ तरह से भी रिमार्क आप लिख सकते हैं. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए यू हैव गॉट 1 मार्क्स, ना, फुल मार्क्स वाज 2. सो रिमार्क में लाइक यू हैव टू सी वेयर वाज द मार्क्स डिडक्टेड. उसके बाद आपको एनालाइज करना पड़ेगा. लेट सपोज there can be multiple reason why the marks was detected or why you did not get the full marks. For example, it could be didn't read properly. तो सबसे पहले क्या आएगा, didn't study. ये हमने कुछ बताया आप लोग को पहले एनालिसिस के बारे में, how to analyze the question. ये सर नो जल्दी बता दें, फिर हम बताएंगे. नहीं तो अगर बताया हुआ तो किसी को बताने की जरूरत नहीं. फिर ठीक है, पहला तो ऑप्शन ये रहेगा didn't study. This should not be an option. मतलब ये कभी भी आप उम्मीद करिए कि कभी भी रिमार्क्स में आपको ये नहीं लिखना पड़े that I did not study this, that is why I did not get the correct answer or I did not attempt it. Fine. Didn't study should not be present. That is the ideal case that we have to have. Okay, in the school test आपके लिए. Didn't study, didn't read properly. ठीक है. थर्ड आएगा आपका copied wrong value. ठीक है, copied wrong value कैसे? फॉर एग्जाम्पल 23 लिखा है लेकिन हड़बड़ी में आपने 32 करके कैलकुलेशन कर दिया. दिस मे हैव हैपेंड टू सम ऑफ यू. किसी के साथ हुआ है ऐसा, या होता है किसी के साथ 16 का 61 कर देते हैं? अच्छा, कभी नहीं हुआ है किसी के साथ. चलिए ठीक है, दैट इज गुड. didn't read properly में ना, sometimes you will see which of the following statement is not correct. और not correct में तो फिर भी आपको दिख जाएगा not, but sometimes they write which of the following statement is incorrect. ठीक है, तो इनकरेक्ट सही से नहीं पढ़ा आपने, पहला ऑप्शन करेक्ट लगा, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना था एंड यू टेक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, दैट मे हैपन, हैज हैपेंड इन 10th स्टैंडर्ड. हाँ, तो यू हैव टू लाइक अभी ना आप स्टार्ट कर दिए. लाइक इफ यू हैव सम वन इन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, तो आप उनको भी ये चीज बताइएगा. दैट विल हेल्प देम अ लॉट इन ऑर्डर टू फॉर देम टू improve. Fourth will be didn't read, didn't properly, then forgot the formula. Forgot the formula. Fifth would be, got confused in calculation.
got confused in calculation. ठीक है. Sixth could be, what can be the other reason? Got confused in calculation में ना ऐसा हो सकता है कि what would happen is that there are statement में, in the question statement there are two variables, है ना, दो वेरिएबल हैं तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए, बट यू हैव ओनली गॉट वन इक्वेशन. द ऑब्वियस इक्वेशन आपको मिल रहा है, एक अनऑब्वियस इक्वेशन. जनरली ये होता है केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, दैट यू नीड टू इक्वेशन, है ना. और दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन जो है ना वो वर्डिंग्स ऑफ द क्वेश्चन में है. इट इज नॉट written directly in the question कि इतना ये लेना है, स्पीड लेना है, वो लेना है, या एक्सेलरेशन इतना लेना है. They have not written it directly, but in the words of the question you can make one equation, and one equation can be made from the numbers that is given in the question. ठीक है, तो उसमें कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कैलकुलेशन में कि भाई दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो है नहीं, कैसे बनेगा. ठीक है, that can be one of the reason. Another sixth reason could be silly calculation mistake. ठीक है, तो अगर आप, ये तो नहीं होना चाहिए 10th के बाद, इफ यू हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स अभी तक ठीक हो जाना चाहिए 6 वाला क्वेश्चन. ठीक है, इस तरह से आप रिमार्क लिखेंगे. ठीक है, एंड वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव गॉट रॉन्ग इन द टेस्ट पेपर यू हैव टू रीडू इट. ठीक है, टेस्ट पेपर इज द प्लेस वेयर द मोस्ट लर्निंग हैपेंस. ये लर्निंग तो आप यही क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप क्लास आ रहे जा रहे, सब कुछ तो हो ही रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फाइन, बट द मोस्ट लर्निंग इट हैपेंस व्हेन यू गिव अ टेस्ट. ठीक है, बिकॉज आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है, हाउ टू गिव द टेस्ट इफेक्टिवली. एट लास्ट आपको बोर्ड देना है, फिर जेई देना है या फिर नीट देना है, तो एट लास्ट यू हैव टू गिव द टेस्ट. हो ठीक है, तो भले ही आप क्लासेस जितनी भी रेगुलर कर लें, है ना, ऑब्वियसली दीस थिंग्स आर गोइंग टू बेनिफिट, इट्स नॉट दैट नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, बट रेगुलर टेस्ट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इवन द लर्निंग वन. तो प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग दैट, है ना. डोंट लीव एनी टेस्ट. एंड टेस्ट की वजह से ना एक आपके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि पढ़ाई आपको करनी है, रिवाइज करना है, सारी चीजें सब करनी है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अब रिमार्क्स में क्या होगा ना, यू विल सी दैट देयर इज वन पर्टिकुलर रिमार्क दैट इज वेरी ऑफन रिपीटेड. मान लीजिए ये वाला बहुत ज्यादा, लाइक यू हैव 5 क्वेश्चन जिसमें, या फिर 10 क्वेश्चन जिसमें रिमार्क है, और उसमें से 6 क्वेश्चन में आपके पास ये सेकंड वाला है, डिड नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. या फिर मान लेते हैं आपके पास 4 बार आ रहा है फॉरगॉट द फॉर्मूला. सो नाउ यू नो वेयर यू हैव टू फोकस मोर, कि आपको फॉर्मूला रिवाइज करने में, मतलब एग्जाम से पहले आपको फॉर्मूला बहुत रिवाइज करना है. फॉर्मूला आपका बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, इट शुड बी देयर इन योर फिंगर टिप्स. अच्छा, फिंगर टिप्स में लिख के मत चल जाइएगा, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स बोर्ड, कि फिंगर टिप्स में फॉर्मूला ही लिख लिया आपने. ठीक है, आप कंठस्थ होना चाहिए, मतलब इट शुड बी देयर इन योर थ्रोट. देयर इज वर्ड इन हिंदी दैट इज वेरी गुड, कंठस्थ. Kant is the throat, and ast means it should stay in the front. It should stay in the throat. ठीक है, so please try to focus on these things. अब बाकी लोग थोड़ा थोड़ा बता दें. जो पता आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? फिजिक्स वगैरह सब कुछ सही चल रहा है? Yes. ओके. किसी में कोई परेशानी? Hmm? Are you having What, sir? are you having any difficulty in any of the subjects? No, sir. In chemistry, No. sometimes. केमिस्ट्री में क्या दिक्कत हो रही है बताइए जरा. The second chapter, atomic structure. नोट्स कंप्लीट है आपके? Yes, sir. Numericals, I'm getting confused sometimes. ठीक है. कितने और किसी को प्रॉब्लम हो रही है न्यूमेरिकल में सेकंड चैप्टर के, बताइए. Only second chapter, but then everything is हाँ, okay. ओके. एनीवन एल्स? जस्टीन, सबिहा, शाइमा, जैनब, सेकंड चैप्टर में और किसको परेशानी हो रही है इन द न्यूमेरिकल्स? जसलीन, व्हाट अबाउट No, यू? sir. सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल को नहीं है. जसलीन, व्हाट अबाउट यू? Just kind of. व्हाट So can काइंड you hear ऑफ? me? या आई कैन हियर यू. Sir, it's okay. Some of them are kind of confusing. Some of them are kind of confusing. One thing that I will suggest for all of you guys is that never look at solutions.
How many of you do this, Javita? If you don't, like, for how much time do you try a question if you're getting confused? 4 times. 4. Four times? Yeah. Till I will getting answer, I will do it. You don't look at the solutions, na? No. No, na? हाँ, ठीक है, very good. Don't never look at the solution. What are the steps that you can do? Like, क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास अगर if the question is आपसे नहीं बन रहा है, then first thing that you should do is write the name of the topic. While you are doing a question, then you will at least remember what topic this question is from. ठीक है? Write the topic. But this is very general. No matter what the question is, you will write the topic. If you are not able to understand the question, or if you are not able to know कि क्या निकालने के लिए कह रहा है, what should I find out? You don't even understand that. ठीक है? Then write the topic. ठीक है? Second thing that you will do is write the formulas from that topic. Write formulas. ठीक है? I am not saying write the formula of what is asked. Write whatever formula you remember. ठीक है? Then see, your brain needs connections, है ना? Your brain needs connection. एक चीज होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं, मतलब सबिहा शाइमा ज़ैनब, you may have attended तरावी. पता नहीं शायद ये एग्जांपल में पहले दिया है आप लोग की नहीं. आप लोग ने कभी तरावी पढ़ी है मस्जिद वगैरह में? Yes. So Yes. if the imam forgets, then somebody says a few words, है ना? लुकमा देना. You know this? Yes. Yes. है ना? And then they remember. So our brain is always looking for some connections. ठीक है? So once you write the topic's name, then like you have the knowledge of doing that question inside your brain. Your brain is not able to fetch that information. कि कहाँ पे located. So when you write the topic, your brain will read topic को पढ़ेगा, and then what will happen? Your brain will go focus in that particular topic. बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, आगे पीछे का टॉपिक, वो फिर आप भूलिएगा. उस टॉपिक के आसपास आपके वो ना पेजेस याद आने लगेंगे. सर ने उस दिन ये कराया था, है ना, उस दिन हम लेट आए थे. वो those things you will start remembering. Once you write the formulas, you will even get deeper into that portion of the brain where the solution lies. ठीक है? So now these are like generalized things. Like you can apply this in physics also, you can apply this in chemistry also if you're doing maths also. ठीक है? Write the topic's name. ठीक है? You are going to force the brain to recall it. It's almost like एक आपका बहुत पुराना दोस्त है and you are not able to remember the name. ठीक है? And if you are not able to remember the name, क्या होता है यार, क्या होता है? अगर आपको बस कोई बोले ना, जैसे मान लीजिए सबिया आ रही है, सबिया को मतलब कोई आ रहा है, सबिया को नहीं पहचानता कि क्या नाम है, फिर बस हाँ सबिया. So you just need that a bit of hint to get to the solution. And also please understand, the brain which is trying to remember the name of Sabiha by looking at her face, the same brain, it is going to remember the formula. It is the same brain. When you write the topic, then formulas will start coming. ठीक है? So please don't, पता नहीं बच्चों में ना एक चीज होता है कि उनको ऐसा लगता है कि दिमाग जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं और दिमाग जो हमारा पढ़ाई में यूज होता है, दोनों अलग है. ऐसा फील होता है क्या आप लोगों को? हाँ, कि पढ़ाई का दिमाग जो लगता है वो कुछ और ही है और नॉर्मल कामों के लिए दिमाग लगता है कुछ और है. दोनों ही, both the work you have the same brain. ठीक है? तो प्लीज ना, ये आप अपने लाइफ से कुछ कुछ चीजें ना, उनको आप इम्प्लीमेंट जब करना चालू करेंगे इन द स्टडीज, देन योर ब्रेन विल ओपन अप. एंड दीज 2 years आर वेरी क्रूशियल फॉर द ओपन ऑफ द ब्रेन. दिमाग का फटना नहीं कह रहे, मतलब यू अंडरस्टैंड द मेटाफर, है ना, ओपनिंग ऑफ द ब्रेन, है ना, दिमाग का खुलना. ठीक है? सो प्लीज ट्राई टू डू दीज थिंग्स. एंड केमिस्ट्री से ज्यादा, फिजिक्स से ज्यादा, आपकी मतलब स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th से ज्यादा, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ वेरी कंप्लीटली. एंड इन these 2 years आर गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ आल्सो, कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है ना, हाउ, एंड यू हैव टू फोर्स दीज थिंग्स. ठीक है? तो लाइक इन योर यूट्यूब वगैरह में भी ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीजें ना बहुत आनी चाहिए. ठीक है? कि हाउ टू स्लीप क्विकली, हाउ टू रिमेम्बर थिंग्स,
how to do calculations quickly. ये like these 2 years are very formative years, जहाँ पे you are in the transition element है यहाँ पर भी, है ना? ना ही completely metal है, ना ही completely non metal है, ना ही S block, ना ही P block, बीच में D block वाले केस में आप, है ना? You are neither a child nor an adult. ये जो ट्रांजिशन होने वाला है ना आपका चाइल्ड से एडल्ट में, ठीक है, दैट these 2 years are going to be very formative. आपके सोचने का तरीका, how you make decisions, like what I feel right now is that मेरा जो ब्रेन है, आप 14, 15, 16, 17 years के बाद, there has not been a big leap on the way I make decisions.